गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ करीना और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस एसक्यूएल जॉइंस के बारे में। सो वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन एडवांस एसक्यूएल जॉइंस। दिस सेशन इज डिजाइंड फॉर इमीडिएट एसक्यूएल यूजर्स looking to elevate their data manipulation skills. We will explore complex join scenarios and powerful techniques that go beyond basic joins, enabling you to extract deeper insights from your databases and you can ready to unlock the full potential of your data relationships. तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एडवांस बेसिक एसक्यूएल जॉइंस के बारे में। मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एडवांस्ड जॉइंस के बारे में। तो पहले हम बेसिक एसक्यूएल जॉइन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद अ क्विक रीकैप ऑफ द फंडामेंटल एसक्यूएल जॉइन टाइप्स जो हमने लास्ट क्लास में किया था। सो वी विल रिविजिट इन अ left, right and full outer join, ensuring a solid foundation for our advanced explorations. Understanding these basics is crucial for mastering more complex join. This section will help to reinforce your understanding and make it easier to apply to the advanced topics. We will also use illustrative diagrams to reinforce the material. These diagrams will make it easier to understand how these joins work are and how they can be used to solve different types of problems. तो ये हमने देखा लास्ट क्लास में बेसिक जॉइन टाइप्स के बारे में। अब जॉइन विद ग्रुप बाय एंड हैविंग फिल्टरिंग एग्रीगेटेड जॉइन रिजल्ट्स। अब हम देखेंगे लेट्स डाइव इनटू द कंबाइनिंग जॉइंस विद ग्रुप बाय कि अगर हम जॉइंस को ग्रुप बाय के साथ कंबाइन कर दें अपने रिलेटेड डेटा को एग्रीगेट करने के लिए, तो फिर हम हैविंग के यूज को किस तरह से करेंगे। सो हैविंग क्लॉज टू फिल्टर ग्रुप्स बेस्ड ऑन एग्रीगेट कंडीशंस. Imagine finding departments with average salaries above a certain threshold after joining the employees and department tables, or analyzing sales data by region, filtering for regions for total sales over $1 million after joining the sales and regions tables. Employees table contains information about employees. This is powerful stuff. Departments table, it contains information about departments. And aggregate function means used to calculate the average salary. पूरी की पूरी average salary calculate करनी है तो फिर आप ये वाला फंक्शन यूज करते हैं. सो ज्वाइन विद ग्रुप बाय एंड हैविंग सिंटेक्स डिटेल, उसी के बारे में एक पूरा सिंटेक्स में आपको पूरी कोडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ. तो कोडिंग जो हमारी रहने वाली है वो ये रहने वाली है. सो हेयर इज अ डिटेल्ड ब्रेक डाउन ऑफ सिंटेक्स. सिंटेक्स का एक डिटेल्ड ब्रेक डाउन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. Select columns aggregate function column from table 1 join table 2 on table 1 dot column is equal to table 2 dot column group by columns having aggregate function condition. So we will cover common errors, troubleshooting tips and best practices for performance optimization. So here is an example query with orders, customers and aggregate function count. So select C dot customer ID, C dot customer name, count order as total orders from customer C, join orders on customer ID, 0 point customer ID group by and having count if customer ID less than 5. मल्टीपल जॉइंस कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम सेवरल टेबल्स. तो हम अपने सेवरल टेबल्स के डेटा को भी कंबाइन कर सकते हैं. सो लेट्स लर्न हाउ टू जॉइन मोर देन 2 tables to create complex relationships. Understanding table relationships and data cardinality is key. For example, you can join customers, orders and order type items table to generate a comprehensive sales report, or combine products categories and supplier tables to analyze supply chain efficiently, and the possibilities are endless. So joining tables, connect more than 2 tables. जो 2 से ज़्यादा tables को हम connect कर सकते हैं. और data cardinality means understanding relationship is key. Okay. Multiple joins query structure and optimization. So discover best practices for structuring complex multi-join queries. Using analysis is a great way to improve readability. Optimizing query performance with appropriate indexing is crucial. A visual representation of join paths can greatly aid understanding. These tips and tricks will help you write SQL like a pro. Structure. Establish a clear query structure. Analysis. Use analysis to improve readability. Indexing. Optimized performance with indexing. Subqueries with joins, dynamic filtering and enrichment. So let's explore using subqueries within join clauses to filter or enrich data. We'll cover correlated versus non-correlated subqueries. Consider joining the products table with a subquery that selects the most recent data for each product, or enriching customer data with information from a subquery that calculates lifetime purchase value.
So its dynamic filter means using subqueries to filter data. Data enrichment means using subqueries to enrich data. And correlated subqueries means understanding different types of subqueries. Subqueries with joins practical examples के साथ देखेंगे. So this card featured more practical examples. We will cover how to combine employee data with department averages. Syntax example and use cases will be provided. We will show some examples with the employees, department and salaries table. So select employee, department name, salary. From employees, join departments, on department, join select department ID, on department ID, and where salary, department average, average salary. So be aware of the performance implications of using subqueries and joins. एक केस स्टडी ले लेते हैं. Let's dive into a real world scenario, building a customer analytics dashboard. So we will combine multiple joins group by having and subqueries to extract actionable insights. We'll also discuss the performance considerations and optimization strategies. So expect to see a sample dashboard output and its interpretation. Data extraction, extract data from databases. Data analytics, perform data analytics with SQL dashboard output. Visualize key insights in a dashboard. So I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा. मास्टरिंग एडवांस जॉइंस, इस क्लास में हमने एडवांस जॉइंस के बारे में देखा. सो congratulations on reaching the end of this presentation. Let's recap the key concepts and techniques we have covered. Remember, understanding data relationship is crucial for effective coding. We encourage key concepts, data relationships. आज की क्लास में इतना ही. Thank you so much.